So I defined what is moment of inertia last class में, and then we have to calculate the moment of inertia of various objects, 1D object, 2D object, 3D objects. There are many objects out there. Standard derivations हमें काफ़ी सारे करने हैं, but before I do that, let me mention that there are a few theorems associated with moment of inertia. So let me first, just a moment. So there are a few theorems which are associated with moment of inertia, which are very helpful whenever you are calculating. Yeah, I've started calculating moment of inertia of various objects when you change the axis and etc. so on and so forth. So theorems associated with moment of inertia. Okay, so one theorem is the theorem of perpendicular axis. This is applicable for a plane lamina. सर स्क्रीन लैग हो रही है। क्या चीज? सर स्क्रीन चिपक गई थी अभी। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा? सर है सर आप उसके लिख रहे हैं वहाँ तो दिख रही है। बेटा आप जिसको नहीं दिख रहा आप एक बार एग्जिट करके फिर से दोबारा ज्वाइन करो। कभी कभी ये इशू होता है, मैंने नोटिस किया है। इफ़ यू ज्वाइन अगेन आपको दिखाई देगा, ठीक है। Theorem of perpendicular axis for a plane lamina. It simply states that the moment of inertia of a plane surface, ठीक है। plane lamina का मतलब है it's a plane surface, it's not a 3D object, it's a 2D object, it's a plane surface. उसमें अगर if you want to find out the moment of inertia with respect to an axis which is perpendicular to the plane, then you can do it by adding up the moment of inertia of the same plane with respect to two axes on the plane perpendicular to each other passing through the intersection of that particular line. थोड़ा सा मैं डेराइवेशन करके मैं स्टेटमेंट दे देता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अगर आपके पास प्लेन लैमिना है विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एक्स वाई प्लेन, लेट्स सपोज। सो ये आपका है एक्स वाई जेड, और आपका जो प्लेन लैमिना है लेट्स सपोज इट इज़ समवेयर हियर। Okay, this is a plane lamina, it is on the surface on the xy plane में है। Now this plane lamina is a continuous distribution of mass. Okay, so the points, every single point is associated with some kind of a mass here. Okay, every single point is associated with some kind of a mass. So if I take some random point, let's suppose I choose a point here. Okay, this point is P. Okay, this is associated with some kind of a mass. Then P, if it is lying on the xy plane, will have coordinates along the x-axis, coordinates along the x-axis, and coordinates along the y-axis. Okay. Choose a point P on the xy plane lying on the plane lamina, okay, and having coordinates, having mass mi and coordinates xi, yi. Okay, so there are a large number of masses on the plane lamina, but I am only choosing the mass mi having coordinates xi, yi. All right. So this is mi and its coordinates are xi and yi.
तो ये जो डिस्टेंस होगा आपका, this is let's suppose Ri, so this is simply given as Ri square is equal to xi square plus yi square. ठीक है, अब let me talk about the moment of inertia with respect to each axis. ठीक है, x, y and z. So what is the moment of inertia about x-axis? So the moment of inertia about the x-axis is basically the sum over of all the mass elements and the square of the distance of all these mass elements from the x-axis. है ना? What is the square of the distance of all the elements from the x-axis? It is yi square. Yes. x-axis से हर एक मास की दूरी है yi. Yes. Yes, sir. Yes, sir. जो Yes, x sir. एक्सिस से हर एक मास एलिमेंट की दूरी है yi. तो therefore if I'm about to find the moment of inertia about the x axis, then that's it. This is summation over mi yi square. If I want to find out the moment of inertia about y axis, फिर यहाँ पे क्या होगा? About y axis मतलब this is sum over of mi and the square of the Xi distance from the y axis, so which is xi square. The square of the distance from the y axis, so this distance, square of the distance from the y axis of each mass element. ठीक है. If I want to find out the moment of inertia about z axis, then the moment of inertia about z axis is equal to sum over of all mass elements and the square of the distance from the z axis. Square of the distance from the z axis is this distance, है ना? Square of the distance of the Ri of all mass elements from the z axis is ri square. Yes. Okay, all right. So that is I z is equal to sum over I of mi ri square, which is nothing but m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square, on and on up to all the n number of particles present in the system, which can simply be written as m1 x1 square plus y1 square plus m2 x2 square plus y2 square plus m3 x3 square plus y3 square plus on and on for all the particles. So you can separate this into m1 x1 square plus m2 x2 square plus on and on, this is one term, plus m1 y1 square plus m2 y2 square plus on and on. So the first term is nothing but summation I mi xi square, and the second term is nothing but summation mi yi square. So this is equal to iy and this is equal to ix. So finally we get, or iz is equal to ix plus iy. So the moment of inertia of the plane lamina with respect to the x-axis plus the moment of inertia of the plane lamina with respect to the y-axis is equal to the moment of inertia of the plane lamina with respect to an axis which is perpendicular to the lamina, okay, such that x, y and z all intersect at the same point. So this is known as the theorem of perpendicular axis. इसका जो statement है यहाँ पे, of course I have constructed in such a manner that the plane lamina is situated on the xy plane. अगर वो change हो जाएगा तो फिर ये आपका theorem का expression भी change हो जाएगा. So the statement for this kind of a theorem is that according to this theorem, the moment of inertia
the moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to the plane is equal to the sum of the moments of inertia, of the lamina about two mutually perpendicular axes. Two mutually perpendicular axes lying on the plane of lamina and intersecting each other at the point where the perpendicular axis passes through the lamina. Okay, so the moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to the plane is equal to the sum of the moments of inertia of the lamina about two mutually perpendicular axes lying on the plane. So the first is moment of inertia of plane lamina about an axis perpendicular to the plane is equal to the sum of the moment of inertia of the lamina about two mutually perpendicular axes lying on the plane of the lamina and intersecting each other at the point where the perpendicular axis passes through the lamina. Okay, this is a simple statement of the perpendicular axis theorem. Okay, this is clear, beta? Yes, sir. And there is also a perpendicular axis theorem for this is A. Okay, and there's a similar sort of a theorem of perpendicular axis for three-dimensional bodies. Do you know what this is? Do you know what it is? No. No, sir. No, sir. Same way, I have, if I have x, y, and z, and if I have some kind of a three-dimensional body, then I can find out the sum of all the moments of inertia with respect to all these axes. So let's suppose that there is some kind of a point P at any random point P in 3D space, okay? And this point P has a distance of r from the origin O, and its subtends, let's suppose
Okay, so this is, let's suppose, mi, that substance, and it has coordinates of xi, yi, and zi. Okay, so now here again I can do the same kind of an analysis that I just did for a plane lamina. I can do the same kind of analysis for a 3D body. So let's do that. The okay, mi is the ith point mass particle, is the mass of situated at xi, yi, zi. ठीक है. Now moment of inertia of body about x axis, ix. What is the moment of inertia of the body about the x axis? The moment of inertia of the body about the x axis is summation over all mass elements and the square of the distance of all the points from the x axis. वो कितना होगा? So y square plus z square. Yes, yes, sir. everybody can think that agrees that this is the term. X is equal to 0. It is the distance, so this is the distance. Yes. Distance of mi from perpendicular distance of mi from x axis. इसको मैं डायग्राम में कहाँ दिखाऊं? YI एंड ZI आएगा या सिर्फ YZ आएगा? yi and zi. ठीक है. And similarly the moment of inertia of body about y axis iy is equal to, ये कितना होगा? xi square plus zi square. प्लस 1. ठीक है. And moment of inertia of body about z axis is iz is equal to summation over mi y xi square plus yi square, xi square plus yi square. So I can Excuse me, add sir. yeah. Sir, can you please explain visualizing y square plus z square से कैसे आया? थोड़ा डायग्राम बता इसमें. Y square plus z square is, if you take a projection on the yz plane, तो y का प्रोजेक्शन ये है, z का प्रोजेक्शन ये है. तो आपका जो ये जो इसका शैडो जो है वो कहाँ गिरेगा? यहाँ पे गिरेगा. ये फिगर आउट कर पा रहे हो? ये दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस. नो, तो मैं दूसरा एक तरीके से बताता हूँ. ये जो पार्टिकल है यहाँ पे है, ठीक है. तो इस पॉइंट पे मैं एक प्लेन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है. तो ये एक्स एक्सिस से इसकी दूरी क्या है इस पॉइंट की? ZI square plus YI square. दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर है कि नहीं? परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल.
आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। जो ये प्लेन है, ये जो प्लेन मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये प्लेन में, ये प्लेन इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। इसमें इस पॉइंट की दूरी एक्स एक्सिस से कितनी होगी? दैट इज दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस. व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस इज z. व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस इज y. x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है xi, लेकिन xi डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द x एक्सिस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब आप यस सर, गॉट इट। हाँ, ओके. मतलब यहाँ पे हमने ये r को ओरिजिन से लिया था, बट इस केस में ये जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से नहीं है, बल्कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस. ठीक है, ओके. सो ix प्लस iy प्लस iz इज इक्वल टू summation over mi xi square plus mi x के लिए है yi square plus mi zi square plus mi xi square plus mi zi square plus mi xi square plus mi yi square. ओके, तो यहाँ पे y is present twice, z is present twice and x is present twice. So this can be written as summation over twice mi xi square plus yi square plus zi square, है ना? So this is nothing but Yes, twice of summation over mi ri square. Okay, so in general I can write that ix plus iy plus iz is equal to twice of mr square. I को हटा देते हैं, mr square in general. So the perpendicular axis theorem for a three-dimensional body simply states that the sum of the moments of inertia of the body with respect to three perpendicular axes is equal to twice this particular quantity mr square. Okay, इसका स्टेटमेंट में लिख देता हूँ. The sum of the moments of inertia, the sum of the moments of inertia of a three-dimensional body about three mutually perpendicular axes is equal to twice the value of sum over mr square about their common point of intersection. So r is measured from the origin, which is the point of intersection of the three mutually perpendicular axes. Okay, so this is the perpendicular axis theorem for three-dimensional body. This was for plane lamina. This is for the three-dimensional body. All right, this is clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right. So the next is something that you probably already know, which is so this is the perpendicular axis theorem. The next is the parallel axis theorem. Parallel axis. Okay. Do you know what the parallel axis theorem is? Yes, sir. क्या है?
So the moment of inertia of the body is equal to the sum of the moment of inertia of that point from the origin and from the axis. If you have, okay, let me first give you the statement. जो mass of the body क्या equals चीज? Your audio is not clear बेटा. इनिशियल आई नॉट पास हो रहा है तो हमारा पैरेलल करता है जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी पॉइंट पे होगा आई नॉट प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो पार्टिकल रखा हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एडिशन होगा आई इक्वल्स टू आई नॉट प्लस एम एल स्क्वायर. Yeah, the moment of inertia of a body about a given axis is equal to the sum of the moment of inertia about a parallel axis passing through its center of mass and the product of its mass with the square of the distance between both axes. So the moment of inertia of a body about a given axis is equal to the sum of the moment of inertia about a parallel axis passing through its center of mass and the product of its mass with the square of the distance between both the axes. So for example, if you have, let's suppose some kind of a body, let's suppose three-dimensional rigid body and the center of mass of this body is this. Okay, this is the center of mass. Then if you make sure that a line passes through the center of mass, with respect to rotation with respect to this axis, if this is, let's suppose, ICM, okay, so ICM simply represents the moment of inertia of the entire body with respect to an axis passing through the center of mass. Then you can calculate the moment of inertia with respect to another axis So let's suppose this is I, and you can calculate its moment of inertia with respect to rotation about this axis by saying that I is simply equal to ICM plus mass of the entire body, mass, and the distance of these perpendicular distance between these two axes, let's suppose D. That's it. Okay, so if you know the moment of inertia of any three-dimensional rigid body about an axis passing through its center of mass, then you can calculate the moment of inertia of another axis parallel to the initial axis but at a different point, passing through a different point, and it is given by I is equal to ICM plus MD square. So here ICM is the moment of inertia with respect to axis
passing through center of mass, and this is moment of inertia of an axis parallel to the axis of ICM. Okay, m is the total mass and d is the distance between both axes, perpendicular distance between both axes. ओके, इसका भी एक छोटा सा डिराइवेशन है, थैंक यू, बट आई थिंक मैं उसको होमवर्क दे देता हूँ, आप इसको कर, अरे 1:45 हो गया। सो इसका जो डिराइवेशन है, टेक इट एज अ होमवर्क, ठीक है, 2 का मैंने कर दिया, इसका आप इसको होमवर्क ले लो, ज़्यादा लंबा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, इट्स वेरी इजी, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू एटलीस्ट कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट इन टुडेज क्लास, ठीक है। कर लोगे बेटा डिराइवेशन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? ठीक है, आप कर लो, ठीक है, छोटा सा इंटरेस्टिंग डिराइवेशन है। ओके, so why I want to do actually at least one problem today. Okay, so these are the 3 different theorems. One is the perpendicular axis theorem for a plane lamina, another is a perpendicular axis theorem for a 3-dimensional body, another is the parallel axis theorem for a 3-dimensional body. Okay, so let us calculate moment of inertia for a particular पैरेलल एक्सिस थ्योरम थी हाँ जी सर, ये 2D और 3D दोनों के लिए सेम ही है जैसे पहले वाली थी। हाँ, दोनों के लिए सेम है, लेकिन पहले वाला जो है, पहले वाले का एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि आपका यहाँ पे 2 एक्सिस मस्ट लाई ऑन द प्लेन, दैट इज अ रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पे कोई 2 पैरेलल एक्सिस के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा। हाँ जी, ठीक है, यहाँ पे जो है पैरेलल एक्सिस के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पे दोनों जो एक्सिस है वो पैरेलल टू ईच अदर है, बट यहाँ पे तीनों एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके सर। Okay, so let us calculate the moment of inertia of a rectangular lamina. Okay. So by rectangular lamina, let me define. नोट डाउन कर लिया बेटा सबने? आगे बढ़ सकता हूँ ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So for a rectangular lamina, let me have an x and y axis. Let's suppose there is a rectangular lamina. Okay, so this is a rectangular lamina. Let's suppose this is the x-axis, this is the y-axis. All right. So basically, I want to calculate the moment of inertia of this rectangular lamina with respect to various axes. With respect to x-axis क्या है, with respect to y-axis क्या है, with respect to z-axis क्या है. Various different scenarios are possible. All right. So if various different scenarios are possible, so let me define some of these quantities first. So this is the rectangular lamina. बेटा अपना माइक म्यूट कर लो। सर लैमिना किसी शीट के लिए बोल रहे हैं ना? Lamina is for sheet, 2D sheet, plain sheet, like a piece of paper. ओके सर। ठीक है, so let's suppose that I want to calculate this. I want to calculate what moment of inertia with respect to x-axis, with respect to या about. ठीक है, about अगर x-axis मतलब rotation about the x-axis. ठीक है, I want to calculate moment of inertia about y-axis. ठीक है, that means rotation about the y-axis. I want to calculate moment of inertia about z-axis. Z-axis का मतलब है अगर z-axis ऐसे है तो इसके अगेंस्ट अगर रोटेशन होता है तो क्या होता है.
आई वॉन्ट टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एजेस, मतलब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसके रेस्पेक्ट में एक्सिस में रोटेशन क्या होगा, यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इससे एक्सिस पे रोटेशन क्या होगा. सो आई वांट टू एनालाइज दिस स्ट्रक्चर एज मच एज आई पॉसिबली कैन. ठीक है, तो सारा देखते हैं एक एक करके. सर ये कर क्या क्या कह रहे हो बेटा? वो अप्रॉक्सीमेटली सारा हो जाएगा सर. आज नहीं होगा तो कंटिन्यू कर लेंगे, क्या दिक्कत है. सो अबाउट द एजेस. ओके, सो एक एक करके करते हैं. हाउएवर टाइम, जितने भी टाइम में हम कर सकते हैं, एटलीस्ट एक्स एक्सिस का तो कर ही लेते हैं. ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कर लेते हैं. ऑलराइट, सो सबसे पहले तो जो चीज़ें दी हुई है, लेट अस राइट नोट डाउन दोज. मास ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. ठीक है, रेक्टेंगुलर लैमिना या शीट. ओके, लैमिना या फिर शीट. सो इज इक्वल टू कैपिटल एम. ठीक है, लेट्स सपोज दिस हैज यूनिफॉर्म मास डेंसिटी. टू कीप द कैलकुलेशंस इजियर, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी that is given by sigma. Okay, this is the uniform mass density. और क्या है, and dimensions are of length is equal to, length को क्या माने, L, and breadth BREADTH is equal to B. So आपका ये हो गया, लेंथ हो गया L और ब्रेथ हो गया this distance. ठीक है, so now how to let us calculate for first of all okay, first of all let me calculate about an axis, passing through its center of mass, and parallel to one of its sides, let's suppose x axis मान लेते हैं हम. ठीक है, x एक्सिस है, y एक्सिस जो भी आप मानो, किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना चाहते हो, y के साथ कर लेते हैं, वो बेटर रहेगा. यहाँ पे अगर बनाएंगे तो ये लेट्स सपोज ये आपका 0 है O, एंड दिस इटसेल्फ इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट. ओके, सेंटर ऑफ मास ऑफ शीट. तो वी हैव प्लेस्ड द कोऑर्डिनेट सिस्टम एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द शीट, एंड देन फ्रॉम देयर वी डूइंग कैलकुलेशंस. ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट सिस्टम को शिफ्ट कर देंगे तो आपकी कैलकुलेशंस अलग चेंज हो जाएगी. तो अभी जो है डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन एरिया. व्हाट इज एरिया? LB. यस Yes, sir. या यस अब अगर मैं जो है विथ रेस्पेक्ट टू एन एक्सिस, मतलब मैं इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मतलब इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर रोटेशन होता है तो आई वांट टू कैलकुलेट कि इस जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अगर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन हो रहा है. तो अगर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन हो रहा है तो हमें फाइंड आउट करना है सम काइंड ऑफ एन एरिया एलिमेंट व्हिच डिस्टेंस इज फ्रॉम द वाई एक्सिस. लेट्स सपोज मैंने एक पर्टिकुलर एरिया एलिमेंट चूज किया. ठीक है, आई चूज दिस एरिया एलिमेंट. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस एरिया एलिमेंट फ्रॉम द वाई एक्सिस? x. Yes. And what is the, let's suppose, the width of this area element? Dx. Okay, and what is the mass of this area element? Dm. ठीक है, dm. so I have chosen an area element on the sheet and I want to calculate the moment of inertia of that area element with respect to the y axis. ये ध्यान में रखना, y axis के रेस्पेक्ट में जब रोटेशन हो रहा है वो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, वो ध्यान में रखना. ठीक है, सो डेंसिटी अगर ये हो गया तो what is the area mass of that area element? तो dm is equal to simply nothing but dx into d. हाँ, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ that this is equal to dm upon area which is b times dx. ठीक है, b times dx.
ओके और यहाँ से मैं कह सकता हूँ डी एम इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स बी डी एक्स, where sigma is equal to m upon lb into b dx. So this is equal to, or dm is equal to m upon l dx. This is okay. ठीक है, so I want to calculate the area element, and the area element dm is in this manner. So now I just want to calculate the moment of inertia about y-axis, which is very easy. Amount of inertia about y-axis. So Ix is equal to, since this is a continuous mass distribution, I can write the integration. Yeah, integration. Yeah, integration dm, और यहाँ पे क्या होगा, x square होगा, है ना, because x is y हो, y कैसे होगी बेटा, यहाँ पे x होगा ना, ऐसा होगा सर। व्हाट इज द, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ द मास एलिमेंट फ्रॉम, सर वो अच्छा ये IX की जगह IY बोल रहा है। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, दिस इज IY, यस यू आर करेक्ट. So let us substitute this here, and if we substitute this here, this ends up becoming capital M upon L x square dx. इसमें लिमिट्स क्या लेंगे, लिमिट्स आर गोइंग टू बी फ्रॉम माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू. सो लिमिट्स आपके हो जाएंगे माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू. सो दिस इज इक्वल टू m upon L x cube by 3 from minus L by 2 to plus L by 2. So this is equal to m upon 3L. So this becomes L cube minus L cube. L cube minus L cube. Okay, this becomes 2m L cube upon 3L. So this is equal to 2 by 3ml square. no sorry L by 2 है ना यहाँ पे, एक सेकंड, L by 2 है, this is L by 2 अपॉन में 8 है। L by 2 cube minus L by 2 cube. So this is equal to m upon 3L into 2L upon 8 आ जाएगा इसमें. So this is equal to 2 into 4. So ये L cube है आपका, so L square हो गया m L square upon 12. Okay, so Iy is equal to 1 upon 12 m L square. This is the moment of inertia of the rectangular sheet with respect to the y-axis. तो ये आपका जो लेंथ है ये L है. जब मैं y-axis के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करता हूँ, इट इज़ 1 by 12 m L square. अंडरस्टूड? नॉट 1 by 12 m B square, वो मिस्टेक आप करते हो. लेकिन इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू द y-axis, देन it is 1 by 12 m L square. Alright, उसी तरह से if I'm going to calculate the moment of inertia with respect to the x-axis, if I calculate the moment of inertia with respect to the x-axis, तो कितना होगा बता सकता है कोई? 1 by 12 mb square. mb square by 12. mb square by 12. Alright, so mb square by 12 है. yes. So almost time is almost up. So do this as a homework. Okay, I'm giving this to you as a homework. This is point number 2. So just take 5 minutes out of your time and calculate this. Calculate moment of inertia. Calculate moment of inertia about x-axis. Okay, Ix कितना होगा? Take this as a homework. Take 5 minutes and do this. Okay, whenever you are free. All right. Okay sir. ठीक है, तो let me just take down the attendance and then you can start attending the program.